Only Yashvi can turn off her video. Okay. Question 3, page number 112, NCERT book, back exercise. Okay. Abdul, while driving to school, computes the average speed for his trip to be 20 kilometers per hour. Okay. So, and on his return trip along the same route, there is less traffic and average speed is 40 kilometers per hour. So basically, होम टू स्कूल जाते टाइम उसकी एवरेज स्पीड थी 20 किलोमीटर्स पर आवर और आते टाइम उसकी स्पीड थी, इज इट गिवन 40 और 30 इन योर बुक? क्वेश्चन नंबर 3 30 ठीक है, एक्चुअली माई इज ओल्ड बुक, मे बी दैट्स व्हाई. So 30 kilometers per hour. Okay, so this was the speed while going, this was the speed while coming. Okay, let distance between home and school is equal to x kilometer. Okay, time taken for onward journey, onward journey means जाते time. Okay, तो time speed equals to distance upon time, time equals to distance upon speed. डिस्टेंस है x किलोमीटर्स, स्पीड है 20 किलोमीटर्स पर आवर, तो ये हो गया जाने का टाइम. सिमिलरली टाइम टेकन फॉर रिटर्न जर्नी, ओके, सो t2 is equal to, distance is same and speed is 30. Okay, now average speed of the trip, we have to find both the trip. Average speed is total distance upon total time, total distance traveled upon total time taken. Okay, total distance traveled is x plus x, total time taken क्या हो जाएगा t1 plus t2, और t1 की वैल्यू है x by 20, t2 की वैल्यू है x by 30. ओके, न्यूमरेटर में x प्लस एक्स 2x, डिनोमिनेटर में हम इस टर्म को सॉल्व करेंगे. इस टर्म को सॉल्व करने के लिए 20 और 30 का एलसीएम लेंगे. एलसीएम ऑफ 20 एंड 30 इज 60. 20 divided by 60, 3, so it will be 3 into x. 30 divided by 60 is 2, so this will be 2 into x. So it will be 2x upon 5x upon 60, or it will be 2x into 60 upon 5x. X and x cancel, 5, 12, so it is 24 kilometers per hour. Okay. A motorboat starting from rest. Okay, Laksh, you will tell me, if a body starts from rest, तो हम क्या करते हैं, क्या लेते हैं? If a body starts from rest, तो क्या notation, what I told you, कि क्या चीज ध्यान रखना है अगर body if it starts from rest? Yes, anybody? Ma'am, the initial point is 0. Initial velocity is 0. Okay. If a body starts from rest, initial velocity is 0. Okay. Accelerates in straight line at constant rate of 3 meter per second square. Acceleration is given. जब भी कभी confusion हो जाए कि ये velocity है या acceleration है, तो we can see the unit. Meter per second square, centimeter per second square, this all are units of acceleration. Okay. For time is given 8 seconds. Okay. How far does the boat travel? We have to find S. Okay, now Yashvi will tell me which equation should I use. मैम फर्स्ट वन. फर्स्ट में तो V आता है, हमको V यहाँ चाहिए ही नहीं, हमको फाइंड क्या करना है, S. यस लक्ष्य, कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? हम सेकंड इक्वेशन क्या है? S equals to ut plus half at square. Okay, so we'll use this equation.
S equals to ut plus half at square. U is 0. Okay. Acceleration is 3. So this term will become 0. First term u 0 into any number is 0. Okay. Acceleration is 3 and t is 8 into 8. This is 4. 12 8s are. What is 12 8s are? Yes. Laksh. 96. 96. Okay. So 96 meter is the answer. Okay. Page 110. Question number 5. Okay. Before discussing question number 5, I want to tell you some basics so that while doing numericals you take always right convention. Okay. So while doing numericals, some things you have to keep in mind. Okay. So there are certain rules. 1 minute, I am telling. While doing numericals, when an object is thrown upward and when an object is falling freely downward under gravity, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, स्टोन है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसको अपवर्ड थ्रो करते हैं और डाउनवर्ड थ्रो करते हैं तो दोनों ही केसेस में कुछ रूल्स होते हैं. ठीक है. व्हेन ए ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इज फॉलिंग फ्रीली, जब वो थ्रोन डाउनवर्ड का मतलब क्या है? इट इज फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी. ओके. इन दिस केस इनिशियल वेलोसिटी is 0. If a body is falling freely, okay, initial velocity is 0, मतलब हम u 0 लेंगे. ठीक है. Acceleration will be positive 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. ये फिक्स वैल्यू है एक्सीलरेशन की. जब भी कोई बॉडी अंडर ग्रेविटी फॉल हो रही है, मतलब हमने सिर्फ उसको कुछ हाइट पे ले जाके छोड़ दिया, ठीक है, तो इट इज फॉलिंग अंडर ग्रेविटी बोलते हैं उसको. इस केस में हम एक्सीलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे. ओके. व्हाइल डूइंग कैलकुलेशंस. ओके. एंड इनिशियल वेलोसिटी विल बी टेकन 0. इफ ए बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड, ठीक है, तो इन दिस केस एक्सीलरेशन विल बी नेगेटिव माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 10 मीटर पर सेकेंड, माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस बोथ आर अप्रोक्सीमेट सेम वैल्यूज ओनली. ठीक है. जिस क्वेश्चन में दिया होगा कि हम -10 हम 10 ले सकते हैं, उसमें हम 10 लेंगे, अदरवाइज हम एक्यूरेट करने के लिए माइनस 9.8 लेंगे. ओके. इन दिस केस व्हेन ए बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड, फाइनल वेलोसिटी इज 0. That is v equals to 0. Okay. Because whenever a body is thrown upward, velocity keeps on decreasing और highest point पे velocity 0 होती है. Okay. And when a body is falling freely under gravity, मतलब उसको किसी हाइट से हम छोड़ रहे हैं, तो सबसे कम वेलोसिटी हाईएस्ट स्टेप पे होती है और धीरे धीरे वेलोसिटी इंक्रीज होती है. ओके. तो इसका न्यूमेरिकल में कैसे यूज है, दिस विल सी इन क्वेश्चन नंबर 5. अ स्टोन इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन. ओके. स्टोन इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन. तो इसमें जिस वेलोसिटी से थ्रो करेंगे वो वेलोसिटी तो होगी इनिशियल वेलोसिटी. ये वाला केस है, अपवर्ड डायरेक्शन मतलब ऊपर. ठीक है. फाइनल वेलोसिटी 0 होगी. जिस वेलोसिटी से हम थ्रो कर रहे हैं वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी, 5 मीटर पर सेकेंड होगी. द एक्सीलरेशन ऑफ स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और एक्सीलरेशन जो होगा वो नेगेटिव होगा क्योंकि बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड. ओके. सो a stone is thrown in vertically upward direction with a velocity of 5 meter per second. So this thing is initial velocity. As a body is thrown upward, final velocity will be 0. Acceleration, it is saying that if acceleration of stone during its motion is 10 meter per second square in downward direction, means downward direction में 10 है तो upward direction में -10 होगा. Okay. What will be the height attained by the stone?
हमको फाइंड करना है डिस्टेंस। जब हम बॉडी को ऊपर थ्रो करते हैं तो जो s होता है वो ही हाइट होती है, ओके। एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर, वी हैव टू फाइंड टाइम, ओके। नाउ so these are the things. First we'll write all the equations. V is equal to u plus at, s equals to ut plus half at square, okay, and v square minus u square equals to 2as, okay. Now v is given, u is given, and a is given. V is given, u is given, a is given, u is given, a is given, and v is given, u is given, and a is given. We have to find s and t. So first and third equation can give us the answer. V equals to u plus at. V is 0, u is 5, a is minus 10, and time we don't know, okay. So we can write 10t equals to 5, t equals to 5 by 10, that is equal to 0.5 seconds. Okay, then next part, okay, we have to find the other thing also, s. So first or third equation can help us. S, 2as equals to v square minus u square. V square minus u square equals to 2as. V is 0, u is 5 square, 2, a is minus 10, and s we don't know. Minus 25 equals to minus 20 s, okay. So this is equal to s equals to 25 by 20, okay. Find its decimal equivalent. ये 5 से काटेंगे तो 5 by 4 हो जाएगा. ये decimal number किसके equivalent है? Tell me. Unmute and say if you are saying the answer. I'm 1.25. 1.25 meter. Okay. So s is 1.25 meter and time is 0.5 seconds. This is our homework. This you can copy actually, and then I will discuss something else. And let me know whenever it is copied so that I can change the slide. Can you show the third question? Yes. Everybody copied? The previous one, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. Hundred and 13, question number 7, back exercise, NCERT book. Okay. A ball is gently dropped from a height of 20 meters. ठीक है. जब भी body, whenever it is falling from a height or it is thrown upward, जो height होती है उसको हम distance लेते हैं s. Okay. So what is given first thing? S is 20 meters. Okay. If its velocity increases uniformly at a rate of 10 meter per second square. लक्ष्य ये क्या दे रखा है? 10 meter per second square. Uniform velocity. नहीं, increases uniformly at the rate of 10 meter per second square. इसकी यूनिट देख के हम बता सकते हैं क्या है? Acceleration. This is acceleration. Okay. I have told you already. Whenever a body is falling from a height, acceleration will be positive. ठीक है? It is. So this is acceleration 10 meter per second square and initial velocity will be 0. Okay. So here we can put these things. We can put u equals to 0 and acceleration as 10 meter per second square. Okay. And u is 0. Okay. With what velocity will it strike the ground?
we have to find the final velocity. After what time will it strike? Excuse me, ma'am. We have to find the time. Yes, Ma'am, your voice is not coming clear. my voice is not clear. 1 minute. Yes, ma'am. Yes, now it is coming clear. Or I'll mute all of you actually. 1 minute. Yes, now I guess you can just type in the chat box if it is better. Okay, or you can say and then mute yourself. Yes. So a ball is gently dropped from a height of 20 meter. We have already seen the rules when a body is dropped from a height. तो हम ये वाले rules apply करेंगे. That means initial velocity 0 रखेंगे और acceleration will be positive. That is 10 meter per second square. These two quantities will take from here u as 0 and acceleration as 10 meter per second square. Height is 20 meter, so s is 20 meter. Okay, we have to find the final velocity and time. Okay, 1 minute. Which equation we have to use? So first step is writing all the three equations. V equals to u plus 80, s equals to ut plus half 80 square. Okay, and v square minus u square equals to 2as. Okay, now what we know s, we know a, we know u. S, a and u. S, a and u. Okay, S, a and u. So which equation should I use? Yashvi, कौन सी इक्वेशन यूज करना चाहिए हमें? मैम लास्ट वाली. लास्ट वाली. गुड. v square. लास्ट वाली. Okay. So v square minus u square equals to 2as. V we don't know. U is 0. Okay, and 2, a is 10 and s is 20. So v square equals to 2 into 2. This is 400. Square root of 400. That is v is square root of 400. What is square root of 400, Laksh? I'm 20. 20. So v is 20 meters per second. Okay. Now, if we know v here, v equals to u plus 80. Now we can use v equals to u plus 80 and we can find time also. Okay, we can find time also. V is 20, u is 0, acceleration is 10 and time we don't know. So 20 equals to 10t or t equals to 20 by 10. That is equal to 2 seconds. Okay.